Hello friends, today we are with the new topic, structure of anther. What is anther? Anther is the male part in the flower. You know that the male part we call it as an anther. We know that the anthers are generally bilobed. You have seen on the upper side of the flower, anthers are present. It is having a lobes, that is of pollen sac, and in the pollen sac what is found? Pollen grains are found. So what is the TS of the anther? Anther plays an important role in an reproduction. So today our topic is about anther. So we will see the internal structure of the anther. After taking the transverse section, we will see what happens in the anther. एंथर को जब हम डिसेक्ट करते हैं, जब उसको हम टीज करते हैं स्लाइड के ऊपर, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है. जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है. एंथर्स बहुत सूक्ष्म होते हैं, अपर साइड पे होते हैं, फ्लावर के अपर साइड पे. जब हम उसको स्लाइड के ऊपर लेते हैं, उसको टीच करने के बाद स्लाइड रखते हैं, स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रखते हैं, और जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. अगर स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान से देखा तो इसको 4 स्पोरेंजियंस दिए हुए हैं, जिसका जो बाहर का लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं. द आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस. The 4 different sporogenous tissues are being connected with this part of the cells. We call it as connective tapetum, which is the innermost cells. You can see here endothecium, it is the middle layer, ये बीच में होता है, और sporogenous tissues होते हैं अंदर, जिसमें spores होते हैं, छोटे छोटे spores होते हैं, जो spores स्टिग्मा पे जाके स्टिक होते हैं, और उसके बाद में दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखा था. So let us see the structure like. These cells are generally parenchymatous tissues. These are the name of the tissues. We have seen in standard 8th and 9th, there are different kind of the tissues. Sclerenchymatous tissues, parenchymatous tissues, which are also responsible for absorptions of the waters, minerals, and which transports. So these tissues are generally present in this also, anther, which is immature. Anthers are diathecous. Di means 2. They have the 2 thecus. Thecus means what? Having the 2 lobes. यहाँ अपन lobes बना रहे, इसे हम lobes बोलेंगे. Lobes में क्या होते हैं? Anthers are tetrasporangiate. Tetrasporangiate means what? 4. 1, 2, 3, 4. That is known as tetrasporangiate. Sporangiate मध्ये spores असतात. It consists of spores. That is 4. TS means what? Transverse sections. They are having a sporangineous tissues. ये जो tissues होते हैं वो क्या develop करते हैं? Microspore tetrad. Tetrad means what? Having a 4 different kind of compartments. Tetrads. Monad, dyad, triad, and tetrads. And after this we can see the description in a very short manner. This is a trick to learn how to write in paper. Epidermis. Epidermis means the outer surface of the anther. Microspores. Subepidermis is made up of endotheciums. This is the subepidermis. Subepidermis means the middle layer. मधल्या लेयरला आपण सब म्हणतो, वरच्या लेयरला आपण एपिडर्मिस म्हणतो, एंडोथेसियम मिडल लेयर, आणि जो सगळ्यात मधला लेयर आहे त्याला आपण टेपेटम म्हणणार आहे. काय म्हणणार आहे? टेपेटम. टेपेटम हा काय असतं? टेपेटम हा इनर लेयर आहे आणि हा न्यूट्रिटिव्ह लेयर आहे. न्यूट्रिटिव्ह म्हणजे काय? तो त्याला पोषक तत्व देत असतो. पोषक तत्व म्हणजे साधारणतः त्याला वाढ होण्याकरिता जे काय उपयोगी जे काय मटेरियल आहे, जे फेवरेबल कंडिशन्स पाहिजे, जे न्यूट्रिएंट्स पाहिजे, ते पुरवायचं कार्य कोण करतं? टेपेटम. टेपेटम इज अ न्यूट्रिशियस मटेरियल. Then after some times when it start bursting, we call them dehisced. Dehisced means what? हे फुटतं ते. फुटल्यानंतर ते बाहेर पडतं ते, त्याला आपण पोलन ग्रेन्स म्हणणार आहे. स्पोरेंजिएटचा बॅग जेव्हा बस्ट होतं त्याच्यामधून पोलन्स बाहेर पडतात, आणि काय कालावधीत हेच पोलन्स वाऱ्याच्या साहाय्याने, ज्याला आपण विंड पॉलिनेशन म्हणतो, इन्सेक्ट पॉलिनेशन म्हणतो, wind pollination, insect pollination, then water pollinations by rain. In that way they transfer to the stigma, and in this way the fertilization takes place in the further process. So structure of anther is very important topic for your preparations. Thank you.